Hi friends and welcome to Adda247. You are watching the Hindu editorial analysis of 6th of March 2017. तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, जहां यहां पर हम लोग 6th मार्च का जो एडिटोरियल है उसका एनालिसिस करने वाले हैं. So my dear friends, as you all know, this particular session is extremely important for your comprehension, para-jumble, close test and other passage-based exercises. We are going to practice a lot of questions as well. तो भाई आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये जो सेशन है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वाला, ये बेहद जरूरी है आपके कॉम्प्रीहेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, पैराजंबल के लिए. तो जरूर देखिएगा इस पूरे शो को, बहुत ध्यान के साथ पार्टिसिपेट भी करिएगा, क्वेश्चंस के आंसर भी दीजिएगा और लास्ट में जो है या फिर लगातार शेयर भी करिएगा इसका वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी अपने आप को अच्छा कर सके, अपना कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल सब कुछ इंप्रूव कर सके. So my dear friends, first of all, as you already know, we're going to take a look at the overview of all the important articles of the editorial that got printed today in today's The Hindu, and then we'll have the in-depth analysis of the two of the most important editorial articles of the day. तो भाई जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले तो हम लोग ओवरव्यू देखेंगे वो सभी आर्टिकल्स का जो कि आज द हिंदू में प्रिंट हुए हैं, और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोग जो है उन दो बेहद जरूरी आर्टिकल्स का जो है एनालिसिस भी करेंगे जो कि आज के पेपर में प्रिंट हुए हैं. तो क्या शुरू किया जाए? शैल वी स्टार्ट? एंड यस, वेल हियर इट इज. सो अब देखिए भाई, ये रहा हमारा पहला आर्टिकल एंड ये है अ न्यू दिल्ली चैप्टर फॉर शेख हसीना. Well, my dear friends, a new Delhi chapter for Sheikh Hasina. So perhaps, you know, the Bangladeshi Prime Minister is about to visit India. And basically, क्या चीज़ें हैं, क्या डिस्कशंस हो सकते हैं, क्या नई उम्मीदें हैं बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में, my dear friends. This particular article is regarding that. It's a good article from a diplomatic point of view. So I think you should go through this one as well. ठीक है भाई? अच्छा, मेरे जस्ट लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा इन लार्जेसी वी ट्रस्ट. सो वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है यहां पर देखा जाए तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का आर्टिकल है, और ये जो है जो बेसिकली फार्मर्स को वेवर दे दिया गया है ना, उसके संबंध में है माय डियर फ्रेंड्स. सो डेफिनेटली गुड आर्टिकल एज वेल. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. And here it is. Well, painting it all black. Well, my dear friends, ये जो painting it all black है, ये जो demonetization हुआ है and जो demonetization के पीछे जो basically view था regarding black money, my dear friends, this article is regarding that. It's a financial article and extremely important from our point of view because it can come in your comprehension. It can also come in your close test. It can also come in your parajumble or other passage-based exercise. And also, you know, you can use this particular article for your descriptive part as well. Hence, it's an extremely important article and we shall analyze this for sure. अच्छा भाई, अब मेरे जस्ट लेफ्ट में देखें तो लिया हुआ है नेवर एंडिंग ट्रेजेडी. Well, my dear friends, this is regarding the use of chemical weapons in Syria, because of which a lot of innocent Syrians were killed, by the way. So this particular article is regarding that, and I think if you have interest in the war crisis, you can definitely go through this one as well. Now let's take a look at the next review slide, please. And here it is. So raring to leave. Now my dear friends, this particular article is regarding the Brexit, by the way, and what exactly is there. It's an extremely important article since it's regarding the European Union, it's regarding the Brexit. We'll have to analyze this one for sure, and we shall analyze it as well. Now if you can see beside that, it's given age free by 2030, India included. So perhaps, you know, we are going to talk about this particular article actually talks about how to get freedom from age by 2030. So it's a good article from a health point of view, and I think you guys should read this as well. Now let's take a look at the last slide review, please. Well, here it is, anniversary analysis. So Israel is about to celebrate its 50th anniversary, by the way, of the war of 1967. In that war, you know, it faced hostilities and enemies from all the sides, and it was able to defeat all the enemies, you know, and emerge victorious. So by the way, this year is going to mark the 50th anniversary of that victory for Israel, and this particular article is regarding that. So I think you should go through this one as well. तो भाई ये खत्म होता है हमारा रिव्यू, और अब बारी आ चुकी है कि हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है हम लोग उसका रुख करें. And now it's time for us to take a look at the first article of today. So shall we start? And yes, well, here it is, my dear friends. पेंटिंग इट ऑल ब्लैक. अब देखा जाए तो पेंटिंग इट ऑल ब्लैक
अब देखा जाए भाई ये जो है ना, ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया है रिगार्डिंग विद द व्यू एट ब्लैक मनी, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज एम्ड एट दैट particular notion, at that particular idea. So the primary idea behind the demonetization was actually countering black money. You know what? And was that idea really very powerful? Was that idea really very conceptual? That, my dear friend, this particular thing will get analyzed in this particular article. So here comes the first slide, please. Now, Finance Minister Arun Jaitley, in his reply to the discussions on the finance bill, has pointed again to the small direct tax base. तो देखा जाए भाई जो वित्त मंत्री है अरुण जेटली जी, उन्होंने जो है डिस्कशन के दौरान जो है फाइनेंशियल बिल पे के जो डिस्कशन चल रहा था उसके दौरान जो है उन्होंने जो है इशारा किया है जो छोटा सा डायरेक्ट टैक्स बेस है उसकी तरफ. So the finance minister, honorable finance minister Arun Jaitley, in his reply to the discussions on the finance bill, has pointed again to small direct tax base. All right, now detailed tax data for 2012-13 showed that the picture has changed a little from the 1990s when only 1% of the Indians were in the direct tax net. अब अगर बात करें भाई तो जो डिटेल्ड टैक्स डेटा है 2012-13 का, वो जो है यही दर्शाता है कि बहुत ही कम बदलाव आया है 1990 के दशक से, जब जो है केवल 1% भारतीय ही डायरेक्ट टैक्स के जो है उसमें दायरे में आया करते थे. सो डिटेल्ड टैक्स डेटा फॉर 2012-13 showed that the picture has changed a little. So it's pretty similar to what was there in the 1990s when only 1% of the Indians were in the purview of direct tax. Now, Mr. Jaitley has presented data on the large sums of money deposited into some banks' accounts post the demonetization of November 8, 2016. तो बेसिकली जब ये फाइनेंस बिल पे बातचीत चल रही थी तो वित्त मंत्री जी ने जो है डेटा प्रेजेंट किया है उन बड़े बड़े सम्स के रिगार्डिंग जो कि जो है कुछ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किया गया था नवंबर 8 के विमुद्रीकरण के बाद. So, Mr. Jaitley has presented data on the large sums of money deposited into some bank accounts post the demonetization of November 8, 2016. Now, the implication is that these may be black funds as they are being tracked and the people behind them will be caught. अब देखो भाई, तो जो परसेप्शन जो है वो ये है कि ये जो पैसा है ये जो है ब्लैक मनी का हो सकता है, इनमें ही ब्लैक मनी मिल सकता है जो कि अकाउंट में पैसा इकट्ठा किए गए हैं, और साथ ही में बेसिकली वो लोग जिन्होंने इसको इकट्ठा किया था या जिन्होंने इसको जमा किया था इन पैसों को, उनको जो है वो लोग बेसिकली काला धन के पीछे हैं और उनका ये पैसा लगातार ट्रैक किया जा रहा है, इसकी लगातार छानबीन की जा रही है और वो लोग जो कि काला धन में इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ लिया जाएगा. सो द परसेप्शन इज दैट बिहाइंड this particular thing is that these may be black money funds and they are being tracked, so the people behind them will be caught for sure. I hope my dear friends कि इतना आपके दिमाग में बैठ गया है. And now let's take a look at the next part. By the way, the Secretary of the Income Tax Resident Officers Association has written to the Central Board of Direct Taxes chairperson that the top leadership has issued directions at times hourly leading to confusions and indecision and to spoiling the image of द टैक्स डिपार्टमेंट. तो भाई देखा जाए तो इनकम टैक्स गैजेट ऑफिसर एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो है एक पत्र लिखा है सीबीडीटी के जो चेयरपर्सन है उनको, उन्होंने ये लिखा है कि जो टॉप लीडरशिप है यानी कि बेसिकली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं बाय द वे, तो जो टॉप लीडरशिप है उसने लगातार डायरेक्शंस दिए हैं और कई बार हर घंटे में अलग तरह के डायरेक्शन दिए हैं जिससे कि जो है हम लोग को काफी कंफ्यूजन हो रही है और हम लोग ठीक से फैसला नहीं ले पा रहे हैं और साथ ही में जो टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा उसकी इमेज काफी खराब हो रही है, उसकी इमेज की किरकिरी हो रही है. So the Secretary of the Income Tax Gazette Officer Association has written to the Central Board of Direct Tax Chairperson that the top leadership, primarily talking about the cabinet ministers over here, has issued directions at times hourly leading to confusion and indecision on their part, by the way, and to spoiling the image of the tax department. Now, officers have exerted pressure on taxpayers via email, SMS and summons. In spite of all this, apparently little black money has been declared. तो देखा जाए भाई
तो जो अफसर है, अब भले टैक्स डिपार्टमेंट के, जिस टैक्स डिपार्टमेंट में बेसिकली वो बिलोंग करें, मेनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही, तो बेसिकली जो अफसर्स हैं टैक्स डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने बहुत अच्छे से निचोड़ के प्रेशर डाला है सभी टैक्स पे करताओं पे, बेसिकली करदाताओं पर, साथ ही में, और उन्होंने ईमेल का प्रयोग किया है, एसएमएस का प्रयोग किया है, और साथ ही में बहुत सारे आईटी समन भी दिए हैं, और इसके सब के बावजूद बहुत ही कम कालाधन जमा कराया गया है. सो ऑफिसर्स हैव एक्सर्टेड प्रेशर ऑन taxpayers via emails, SMSs and summons, and in spite of all this, apparently a very small amount of black money has been declared. I hope my dear friends, इतना जो है बढ़िया से बैठ गया होगा आपके दिमाग में, और अगर बढ़िया से बैठ गया है तो आप लिख सकते हैं बैठ गया सर. Now let's take a look at the vocab review, and here comes the next slide. Well, picture has changed little means the situation is still the same. बहुत कम बदलाव आया है, लगभग जो है देखा जाए तो अभी भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन है. Situation is pretty much the same. Then implication can also mean an associated result, or it can also mean an assumption or a perception. तो जो implication होता है भाई, देखो इसके दो मतलब होते हैं. इसका मतलब होता है कि कोई रिजल्ट, किसी प्रकार का जो रिजल्ट निकले, या फिर जो है ये किसी चीज के पीछे की जो भावना होती है, जो परसेप्शन होता है, जो assumption होता है, उसकी ओर भी इशारा कर सकता है. अब ट्रैक्ड का मतलब, ट्रैक्ड इज परस्यूड परहैप्स, तो बेसिकली ट्रैक देखा जाए तो मतलब बेसिकली जिसमें निगरानी की जा रही हो, उस चीज को यह शो करता है. इनडिसीजन इज अनसर्टेनिटी, तो बेसिकली कह सकते हैं मतलब श्योर ना हो पाना या पक्का ना हो पाना किसी चीज का, क्या फैसला लिया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए. तो exerted is make use of, rather कह सकते हैं आप, and primarily exerted pressure, it's combined together, it's used together, means to, कह सकते हैं आप निचोड़ के एकदम प्रेशर डालना, अच्छे से भरपूर प्रेशर डालना, so that's the case. Now my dear friends, it's time for having a look, in fact taking a look at question number 1, and here it comes for you. Question number 1, ladies and gentlemen. So, Finance Minister Arun Jaitley, in his reply to the discussion on finance bill, has pointed again to small direct tax base. Now, consider this particular question and then tell me which one of these statements from 1, 2, 3, 4, 5 is the correct answer and matches the statement in the given slide. Your time starts now. 30 seconds, guys. Hurry up. Come on. Just 20 seconds left, guys. What's the answer? Hurry up. Last 10 seconds. Quickly. What's the answer? 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. तो भाई समय यहां पर समाप्त हो चुका है आप लोगों का सही जवाब देने का, एंड आई कैन सी अ फ्लड ऑफ आंसर्स इज कमिंग बाय द वे. तो बिल्कुल बाढ़ लगी हुई है और ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन नंबर 5 की तरफ ही इशारा कर रहे हैं. नाउ दैट्स करेक्ट और नॉट, वी विल हैव टू चेक दैट आउट. So Finance Minister Arun Jaitley, in his reply to the discussion on the finance bill, has pointed again to the small direct tax base. Now, statement 1 is detailed tax data for 2012-13 showed that the picture has changed little from the 1990s, when only 0.1% of Indians were in the direct tax net. Well, only 0.1% of Indians? No, my dear friends, that's wrong, and that's why statement 1 cannot be the correct answer. Now, statement 2 says, detailed tax data for 2012-13 showed that the picture has changed a little from 1990s, when only 10% of Indians were in the direct tax net. अब देखा जाए, the picture has changed little. तो भाई शायद ये सही जवाब हो सकता है, but my dear friends, in statement number 2 we are talking about 10% of Indians, but no, it was 10% of Indians, and that's why this cannot be your correct answer as well. Now, statement 3 says, well, detailed tax data of 2012-13 showed that the picture has changed little from the 1990s, when only 1% of Indonesians were in the direct tax net. Did we talk about Indonesians? No, we did not. That's why this cannot be the correct answer as well. Now, statement number 4 says, detailed tax data for 2012-13 showed that the picture has changed little from 1980s. Did we talk about 1980s? No, we did not. That means only option number 5 can be the correct answer, which says detailed tax data for 2012
13 show that the picture has changed little from the 1990s when only 1% of the Indians were in the direct tax net. यानी कि वो सभी लोग जो लगातार यहाँ पर ऑप्शन नंबर 55555 लिखे जा रहे थे, they have done a good job because that is the correct answer. And I hope, my dear friends, that all of you, all of my dear viewers would have opened their account for sure. And if it's not one-on-one, no worries, my dear friends, आप आगे जाके अपना अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है? So congrats to all of those who scored the first point over here, and one-on-one you would have scored for sure. अच्छा, अब देखते हैं हम लोग अगला वाला हिस्सा, and here it comes. Now, decoding account deposits. Well, in the budget speech, the finance minister stated deposits of more than rupees 80 lakh were made in 1.48 lakh accounts with an average deposit size of rupees 3.31 crore. अब देखा जाए भी तो जब बजट की स्पीच चल रही थी तब माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि 80 लाख से ज्यादा रुपयों के जो डिपॉजिट्स हुए हैं वो 1.48 लाख अकाउंट में किए गए हैं और औसतन जो डिपॉजिट है वो 3.31 करोड़ का किया गया है. So, in the budget speech, the finance minister stated that deposits of more than rupees 80 lakh were made in 1.48 lakh accounts with the average deposit size of rupees 3.31 crore. Deposits between rupees 2 lakh and 80 lakh were made in about 1.09 crore account with an average deposit size of rupees 5.03 lakh. और साथ ही में देखा जाए उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लाख से 80 लाख के बीच के जो डिपॉजिट्स थे वो तकरीबन 1.9 करोड़ अकाउंट्स में किए गए हैं और इनका जो औसतन डिपॉजिट था वो 5.03 लाख रुपए का था. So, the deposit between rupees 2 lakh and rupees 80 lakh were made in about 1.209 crore accounts with an average deposit of size of rupees 5.03 lakh. Now, these two add up to about rupees 10 lakh crore. तो अगर हम बात करें भाई जो पहला वाला आंकड़ा था ऊपर वाला और फिर जो नीचे वाला आंकड़ा था अगर हम मिलाकर देखें तो तकरीबन 10 लाख करोड़ के जो है मतलब पैसा वापस आया है अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है. सो दीज टू एड अप टू रुपीज 10 लाख करोड़ बाय द वे. Thus 2/3 of the total rupees 15 lakh crore of old notes returned to the banks and were accounted for by 1.1 crore accounts. तो देखा जाए तो टोटल बेसिकली जो कह सकते हैं आप वैल्यू था, जो टोटल वैल्यू थी पुराने नोटों की 15 लाख करोड़ की, तो उसमें से देखा जाए तो तकरीबन 2/3 हिस्सा वापस आ गया है बैंक्स में जमा होने के लिए और साथ ही में तकरीबन ये जो है 1.1 करोड़ अकाउंट्स का यहां पर ब्यौरा देता है. So, thus the 2/3 of the total of rupees 15 lakh crore of old notes returned to the banks were accounted for by rupees 1.1 crore accounts. Now, even if 1 or 2 lakh crores of this sum proves to be black, after years of litigation etc., this would hardly dent the black economy, generating rupees 93 lakh crore in 2016. तो अगर देखा जाए भाई इवन अगर ये जो पूरा अमाउंट इकट्ठा हुआ है तकरीबन 10 लाख करोड़ का, अगर इस 10 लाख करोड़ से 1 या 2 लाख करोड़ जो है मान लेते हैं हम काला धन भी होगा इतने सदियों के केसेस के बाद भी, तो भी जो है जो तकरीबन 93 लाख करोड़ का जो इकोनॉमी क्रिएट हुआ है 2016 में काला धन का, सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, तो बेसिकली उसको ये हार्डली बहुत ही हल्के से डैमेज करेगा. Now, my dear friends, this particular order has not stated that from where has it quoted this particular figure of 93 lakh crore black economy. Okay. Well, अब देखा जाए, see, even if 1 or 2 lakh crore of this 10 lakh crore, by the way, proves to be black after years of legal cases, this would hardly damage the black economy, generating rupees 93 lakh crore in 2016. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको ये 93 लाख करोड़ का आंकड़ा कहां से मिला है वो इन्होंने शो नहीं किया है. Now, many businesses such as petrol stations and hospitals generate a lot of daily cash. तो भाई बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जैसे कि पेट्रोल, अगर हम बात करें पेट्रोल स्टेशंस की या हॉस्पिटल्स की, जो कि रोजाना बहुत सारा कैश जो है बनाते हैं. सो मेनी बिजनेसेस सच एज द पेट्रोल स्टेशंस एंड हॉस्पिटल्स जनरेट अ लॉट ऑफ डेली कैश. नाउ दे वर अलाउड टू यूज ओल्ड करेंसी नोट्स एवरी डे. दे वुड हैव डिपॉजिटेड लैक्स ऑफ रुपीज एंड ओवर अ मंथ करोड़. तो देखा जाए भाई
तो रोज अब ऑब्वियस है कि हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स को अलाउ किया गया था कि आप पुराने जो नोट्स हो उनको एक्सेप्ट करिए। और देखा जाए तो जब डिपॉजिटिंग की बात आई होगी बैंक्स में, तो ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस रहे होंगे, पुलिस बेसिकली आपके पेट्रोल स्टेशंस या हॉस्पिटल्स की, तो इन्होंने तकरीबन रोजाना अगर समझा जाए तो लाखों रुपए जो है इकट्ठा किए होंगे बैंक में। और अगर हम महीने का आंकड़ा दें तो तकरीबन इन्होंने करोड़ों पैसे जो है इकट्ठा कराए होंगे बैंक में। सो दीज particular hospitals or petrol stations, by the way, were allowed to use the old currency notes, and every day they would have deposited lakhs of rupees, and over a month it would have gone up to crores as well. Well, businesses hold working capital and cash in hand, which depending on the size of businesses could be substantial. अब obviously देखो भाई, कोई भी बिजनेस हो, अब बेसिकली कुछ भी उसका साइज हो, लेकिन हर बिजनेस में कुछ ना कुछ कैश इन हैंड होता ही है। ऑलराइट, सो बिजनेसेस होल्ड वर्किंग कैपिटल एंड कैश इन हैंड डिपॉजिटिंग, नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, कुड बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और सब्सटैंशियल। Well, Mr. Jaitley, our finance minister, has stated that there are 5.6 crore informal sector individual enterprises and firms doing small business. तो भाई माननीय जेटली साहब ने ये कहा है कि बेसिकली देखा जाए तो 5.6 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस हैं जो कि छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं, छोटे मोटे व्यापार चलाते हैं। सो मिस्टर जेटली हैज स्टेटेड दैट देयर आर 5.6 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एंड फर्म्स डूइंग स्मॉल बिजनेसेस। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बाय द वे, अब देखा जाए, देखो, So it's time for a question, but then again accounted for, आप समझ चुके होंगे यहां पर ना, जिसका ब्यौरा दिया जा रहा हो, and dent is obviously damage or harm. Now let's take a look at question number 2, and here it comes for you. So which of the following is true according to the passage? बताइए भाई, ये जो अभी आपके सामने 3 स्टेटमेंट आ गए हैं, इन तीनों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पैसेज के हिसाब से सत्य है? आपके पास है 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप, come on. Come on guys, 20 seconds left to answer. What's the answer? Litigation means legal case. Yamini. Come on guys, 10 seconds more. What's the answer? 5, 4, 3, 2, 1. टाइम्स अप। तो भाई समाप्त हो चुका है समय, लेकिन लोग लगातार यहां पर चौके पे चौका मारे जा रहे हैं। आई कैन सी constantly people are going after option number 4, 4, 4, 4, 4. Now is 4 correct or not? That we'll have to check out, by the way. Well, statement A says, now we had to check out the true things. Okay, statement A says many businesses such as petrol stations and schools generate a lot of daily cash. Did we talk about schools in the previous slides? No, we did not. That means statement A cannot be a part of the answer. Now statement B says even if 1 or 2 lakh crores of this sum proves to be black money after years of litigation or legal cases, etc., this would hardly give a blow to the black money of rupees 93 lakh crore 2016. Well, then again, my dear friends, this, by the way, was written in one of the previous slides. That's why this can be the answer. Now, statement B can be a part of the answer over here. Statement C says Mr. Jaitley has stated that there are 6.6 crore informal sector individual enterprises and firms doing small business. I think this can be clubbed as the correct answer, right? That means option number 5, only B and C can be said to be the correct answer, right? But it will not happen. Why? Because there were 5.6 crore informal sector, not 6.6 crore informal sector individuals, right? That's why, my dear friends, only true case is only one, that is only B. So all those of you who chose option number 2 or only B, you have given a correct answer, and well done, my dear friends. I hope that the majority of you would have scored 2 on 2 for sure. मेन बात यह है कि जो समझा रहा हूं वो बैठना चाहिए, और अगर बैठ रहा है तो बसला लिख सकते हो आप यहां पर। साथ ही में you can also like the video and share it with your friends and family members so that they can enjoy it as well. Now let's take a look at this third part, and here it comes, the next part of the article. So such small business work mostly in cash and therefore may hold fairly large sums of it. अब देखा जाए तो ऑब्वियस है कि 5.6 करोड़ का जो आंकड़ा है इंडिविजुअल्स का,
ये जो बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर ये कैश में ही काम चलाते हैं और बेसिकली इनके पास अच्छा खासा कैश का अमाउंट होता है. सो सच स्मॉल बिजनेसेस वर्क मोस्टली इन कैश एंड देयरफॉर मे होल्ड fairly large sums of it. He has also said that there are 13.94 lakh registered companies as of March 31, 2014. Now, by the way, the finance minister जो हमारे ये बेसिकली वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 13.94 लाख रजिस्टर्ड कंपनी है 31 मार्च 2014 के अगर हम बात करें उन तक, इस पर्टिकुलर डेट तक. So he has also said that the finance minister has also said that there are 13.94 lakh registered companies as of March 31, 2014. Now of these 5.97 lakhs filed tax returns, but 2.76 lakh of them showed a loss or zero income. अब देखा जाए तो इस 13.94 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज में से 5.97 लाख ने जो है इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल किया है, लेकिन जो 2.76 लाख हैं कंपनियां हैं वो जो हैं लॉस या फिर जीरो इनकम दिखाती आई हैं. सो ऑफ दीज 5 of this particular 13.94 lakh registered companies of March 31, 2014, 5.97 lakh filed tax returns, but 2.7 lakhs of them showed a loss or zero income. Well, companies not filing returns or running at a low or at loss at zero profit also hold cash. अब ऑब्वियस है कि वो कंपनियां जो कि टैक्स नहीं भर रही हैं, जो कि टैक्स का रिटर्न नहीं दे रही हैं, और साथ ही में वो कंपनियां जो कि बेसिकली जीरो पे, जिनका बेसिकली जीरो प्रॉफिट हुआ है, जीरो इनकम हुआ है या फिर नुकसान भी हुआ है, वो भी कैश रखती हैं अपने पास. सो कंपनीज नॉट फाइलिंग रिटर्न्स रेगुलरली और रनिंग एट लॉस और एट जीरो प्रॉफिट also hold cash and to hire labor by inputs spent on overheads. अब देखा जाए तो ये जो कैश इनके पास होता है, इससे ये लेबर को हायर करती हैं, साथ ही में इनपुट्स खरीदती हैं, रिसोर्सेज खरीदती हैं, और साथ ही में जो अलग अलग उनके बेसिकली ओवरहेड्स में खर्चे हैं वो करती हैं. सो these companies hold this particular cash to hire labor, buy inputs and spend on overheads. Well, the number of businesses mentioned by the finance minister and the crores of farmers together could legitimately hold about rupees 9 lakh crore of cash in hand. अब अगर हम बात करें तो जितने यहां पर बिजनेसमैन की बात करी है, जितने बेसिकली व्यापारियों की बात करी है, व्यापारों की बात करी है वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, तो अब इन व्यापारियों को मिलाकर और खास करके जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, इनको जो इनके पास जो कैश होता है, इन कैश को मिलाकर देखा जाए तो लीगली, ठीक है भाई, तो लीगली अगर देखा जाए तकरीबन 9 लाख करोड़ का कैश जो है इन लोगों के पास होने वाला है इन हैंड. Now, so, the number of businesses mentioned by the finance minister and the crores of farmers together, by the way, could legally hold about rupees 9 lakh crore of cash in hand. Now, the remaining 8.5 lakh crore of currency in circulation in October 2016 would have been with the household. और साथ ही में अगर देखा जाए तो अक्टूबर में जो 8.5 लाख करोड़ की करेंसी रही होगी सर्कुलेशन में जो की थी, वो ऑब्वियस है कि जो आम के जो घरेलू लोग होते हैं, जो घर होते हैं, उनके पास रहा होगा, so would have been with the household. So the remaining 8.5 lakh crore of currency in circulation in October 2016 would have been with households as well. Now, let's take a look at the next part over here. All cash is not black. The government has said it would use the data mining to figure out whether the large deposits in accounts are consistent with their declared income. भाई सरकार ने ये कहा है कि सरकार जो है डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करेगी ये देखने के लिए ये जो बड़े बड़े डिपॉजिट किए गए हैं अकाउंट में, क्या जो लोग इन डिपॉजिट्स को कर रहे हैं उनकी इनकम इतनी ज्यादा है कि वो इतने बड़े डिपॉजिट्स कर सकें. सो द गवर्नमेंट हैज सेड दैट इट वुड यूज डेटा माइनिंग टू फिगर आउट वेदर द लार्ज डिपॉजिट्स इन अकाउंट्स आर कंसिस्टेंट विद देयर डिक्लेयर्ड इनकम्स. Now, this will be a difficult exercise at best. और obvious है कि ये जो है बहुत ही जटिल प्रतिक्रिया होने वाली है. So this will be a difficult exercise at best. Cash as working capital has to be distinguished from cash as saving from income.
And you know what? The government has also said that, the cash as working capital has to be differentiated and distinguished from cash as savings from income. अब obvious है, तो जो cash है, now see, the cash as working capital जो रहेगा, उसको आपको अलग करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली आपको कामकाजी में जितने कैश की जरूरत पड़ती है, उस कैश को अलग दिखाना पड़ेगा, साथ ही में जो आपका इनकम से सेव हो रहा है कैश, उसको आपको अलग शो करना पड़ेगा. So cash as working capital has to be distinguished and differentiated from cash as savings from income. Well, every household keeps some money for day-to-day requirements and for emergencies. अब obvious बात यह है कि हर घर आने में जो है कुछ ना कुछ पैसे रखे ही जाते हैं और रखे होते भी हैं, ताकि जो हर रोज की जो उनकी जरूरतें होती हैं वो पूरी की जा सके, और साथ ही में अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो वो उसकी भी पूर्ति की जा सके. सो एवरी हाउस होल्ड कीप सम मनी फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर इमरजेंसीज. Well, my dear friends, now this was all in this particular article. Now it's time for the Royal Rumble Para Jumble. So are you ready for the Royal Rumble Para Jumble? And here it is. So, well, my dear friends, you got once again, you have an 8-sentencer over here, and I'm going to give you 2 minutes, which is approximately 120 seconds. So, you have 2 minutes. Arrange this para jumble. Your time starts now. Hurry up. Come on. Well, 90 seconds left, guys. What is the order? Have you made it? "75 seconds left to answer. Quickly. Last 60 seconds, guys. Hurry up. Arrange it. So GBC EDFA says Rahul Sharma. 45 seconds left. Hurry up. Everyone has to arrange it. Come on. "30 seconds left. Come on, everyone has to try. Everyone must try. Come on." GECDFAB says Savar Bajia. GBEHFA says Varun Bhatia. 20 seconds more. Hurry up, quickly. What's the arrangement? Last 10 seconds, guys. Quickly. Everyone has to arrange it. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. तो भाई समय समाप्त हो चुका है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो almost everybody has answered. That's really good to see, and I can see a flood of answers. The people are still giving a lot of combinations, so that's really good to see. I hope these combinations are your honest answers and you're not copying from anywhere. Let's take a look at the correct order, and here it is. Well, it is BEC FDGAH. That means the correct order is BEC FDGAH. तो basically जो सही order है वो है BEC FDGAH. Okay, now well my dear friends, let's just take a look at the arrangement. First statement is small businesses work mostly in cash and therefore may hold. तो basically जो छोटे business होते हैं, जो basically छोटे व्यापारी होते हैं, वो ज़्यादातर कैश का ही प्रयोग करते हैं, और इसीलिए काफ़ी जो है उनके पास हो सकता है, काफ़ी अमाउंट हो सकता है, right? And fairly and may hold fairly large sums of it. He has also said that there are 13.94 lakh registered companies. तो देखा जाए तो obvious है, तो वित्तीय मंत्री जो है उन्होंने ये भी कहा है कि 13.94 लाख रजिस्टर्ड कंपनीज हैं एज ऑफ मार्च 31, 2014. ऑफ दीज 5.97 लाख फाइल टैक्स रिटर्न्स, बट 2.76 lakhs ऑफ देम. अब साथ ही में बेसिकली यहाँ पर नाउ वी कैन सी अ पर्टिकुलर फिगर ऑफ द कंपनीज व्हिच फाइल टैक्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो
well, F says showed a loss or zero income. Now 2.7 lakhs company by the way showed a loss or zero income. Company is not filing tax returns or running at a loss और एट अ जीरो प्रॉफिट ऑल्सो होल्ड कैश. तो ऑब्वियस है वो कंपनियां जो कि बेसिकली कैश रिटर्न्स नहीं देती हैं या जिनका लॉस हुआ है उनके पास भी काफी कैश होता है टू हायर लेबर बाय इनपुट्स स्पेंड ऑन ओवरहेड्स, यू नो. सो बेसिकली दीज कंपनीज व्हिच आर नॉट फाइलिंग रिटर्न्स और रनिंग एट लॉस ऑल्सो हैव कैश, यू नो, टू हायर लेबर बाय इनपुट्स एंड स्पेंड ऑन ओवरहेड्स. द नंबर ऑफ बिजनेसेस मेंशन्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द crores of farmers together could legit. Now see, my dear friends, I know many of you thought G was the first statement. Well, if I just read it like this, the number of businesses mentioned by the finance minister does, you know, it does seem as the first sentence. But then again, my dear friends, you should have checked out the connector as well. तो भाई जब भी आपको लगे कि भाई ये देखो पहला स्टेटमेंट हो सकता है, तो उसके बाद वो जिससे जुड़ रहा है ना, उसका बेसिकली जिससे कनेक्ट हो रहा है उसका पेयर भी ठीक से देखा करो. And you know, so the number of businesses mentioned by the finance minister and the crores of farmers together could legitimately hold about rupees 9 lakh crore. Now, by the way, all those of you who connected G and A, you would have got a good idea that, you know, see, this is finalizing something. That means this cannot be the first statement. This cannot be the first statement. ठीक है भाई? तो अगर आप G और A को जोड़ के देखोगे तो अब समझ पाओगे कि देखो भाई ये कोई फाइनल आंकड़ा दे रहा है, यानी कि ये शुरुआती आंकड़ा नहीं हो सकता है. And that's why this cannot be the independent sentence. Now, and you know, finally, A comes H, cash in hand, crores of cash in hand. The remaining 8.5 lakh crore of currency in circulation on October 2016 would have been with households. So I hope, my dear friends, that you guys would have got 1 mark for show, and all those of you who weren't able to get the correct combination or who weren't able to score 1 mark, even if your half the combination was right, if your half, what do you say, अरेंजमेंट वॉज करेक्ट, यू कैन गिव योर सेल्फ हाफ मार्क. ठीक है भाई? तो अगर 8 में से आपके 4 कॉम्बिनेशन सही थे तो आप अपने आप को आधे मार्क्स दे सकते हैं. सो ऑल दोज ऑफ यू हु गॉट इट हाफ राइट कैन गिव योर सेल्फ हाफ मार्क्स एज वेल. एंड आई होप, बाय द वे, दैट विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ पैराजंबल, योर स्कोर वुड हैव रीच्ड 3 on 3 for sure. And if it's not 3 on 3, even 2 on 3 and around is also a very beautiful score. भाई उम्मीद करता हूं कि आपका स्कोर 3 on 3 तक पहुंच गया होगा, और अगर 3 on 3 नहीं भी पहुंचा है तो भी कोई बात नहीं. यू लर्न समथिंग न्यू, आपको अपने कुछ नया सीखा, और आपका जो स्कोर है वो 2 on 3 के आसपास जरूर पहुंच गया होगा, जो कि बेहद खूबसूरत सा स्कोर है. एंड बाय द वे, आई होप दैट व्हाटएवर आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग टू यू हैज बीन गेटिंग सीटेड इन योर ब्रेन, राइट? तो ऑब्वियसली आप देखो भाई, अगर जो बता रहा हूं वो बैठ रहा है तो ये भी सुन लो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का समरी आपको मुझे भेजना है at saurabh.day@adda247.com. I've only taught you, I've only explained to you a part of this article. Now you'll have to go back and read the article, summarize it, and send to me at saurabh.day@adda247.com. Now it's time for the next article, and here it comes. Well, raring to leave. Now, this is regarding the Brexit, by the way, and you know very well who exactly is raring to leave, which is Great Britain, by the way, from the European Union. Now, let's take a look at the article. So, in June last year, the first result to be declared in Britain's EU referendum was from Gibraltar, the tiny British overseas territory on Spain's southern coast. अब देखा जाए भाई, तो भाई जब ईयू का रेफरेंडम हुआ था कि क्या ब्रिटेन को ईयू में रहना चाहिए या फिर बाहर निकलना चाहिए, तो जो पहला फैसला आया था, जो पहला रिजल्ट आया था, वो जिब्राल्टर से आया था. अब मैं आपको ये बता दूं कि जिब्राल्टर जो है ये ब्रिटिश की वो टेरिटरी है जो कि ब्रिटिश के मेनलैंड में नहीं आती, बल्कि ये जो स्पेन वाली कंट्री है ना, स्पेन के साउथ की तरफ है. ठीक है? नाउ इन जून लास्ट ईयर द फर्स्ट रिजल्ट टू बी डिक्लेयर्ड इन ब्रिटेन्स EU referendum regarding Brexit or not to exit. This particular, the first of these results came from Gibraltar, the tiny British overseas territory, which means it is not a part of Britain's, it is not a part of Great Britain's mainland, by the way, and this is actually an overseas territory on Spain's southern coast, with an estimated population of around 30,000, and approximately 30,000 people are there, you know, they are the inhabitants of this particular overseas territory of Great Britain. Well, the result was a resounding victory for the Remain in Europe campaign.
एंड हालांकि जो फाइनल रिजल्ट निकला वो ये था दैट ग्रेट ब्रिटेन शुड लीव द यूरोपियन यूनियन, बट द रिजल्ट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम जिब्राल्टर वाज लाइक दिस, दैट 84% of the voters turned out, in fact, and the majority of the voters voted that British should remain in the European Union. Now they voted from Gibraltar, they voted like this. Okay, so although the final results was that that British should leave the European Union, but the Gibraltar's result was actually a very electrifying victory for those who wanted British to remain with the European Union. And nearly 84% of the voters turned out and 96% of them voted in. The result was hardly surprising. अब देखा जाए तो तकरीबन जिब्राल्टर में जो है इन 30,000 लोगों में से 84,000 वोटर्स जो है आए, और साथ ही में 96% लोगों ने इन 84,000 में से ये कहा कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए। और ऑब्वियस है ये जो रिजल्ट निकला है, हो सकता है आपको थोड़ा सा चौंकाने लगे या मुझे चौंकाने लगे, लेकिन वहां के लोगों के लिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सो नियरली 84% of the voters of Gibraltar who turned out, by the way, and 96% of them voted in. That means they voted that the British should remain with the European Union, and the results were hardly surprising, by the way. Well, while most residents of Gibraltar are British passport holders following legislation in 1981, the territory is very interlinked with that of the European Union. अब देखा जाए तो जो ज्यादातर लोग रहते हैं ना जिब्राल्टर में, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, यानी कि ब्रिटिश है कह सकते हो आप, और बेसिकली लेकिन देखा जाए तो ये जो हिस्सा है, ये जो टेरिटरी है जिब्राल्टर वाला, ये जो है ना काफी मिला जुला सा है यूरोपियन यूनियन के साथ। सो while most of the people of Gibraltar are hold a British passport, means they are British in origin, by the way, the territory of Gibraltar is very intertwined or interlinked with that of the European Union. I hope this much has got seated, इतना समझ में आ गया है। Well, and you know what? With interlinked with that of the European Union and Spain in particular. और बेसिकली देखा जाए तो काफी उलझी किस्म की जिब्राल्टर की टेरिटरी है, और ये यूरोपियन यूनियन के साथ उलझी किस्म की है, और साथ ही में स्पेन के साथ भी उलझी किस्म की टेरिटरी है इसकी। Well, so its status as an offshore banking sector, thanks to its low tax environment, is boosted by its membership of the EU. अब obviously, see my dear friends, when any particular place is actually an overseas territory of any particular country, it has its own tax benefits. अब देखो भाई क्या है ना, जब कोई पर्टिकुलर जगह जो है ओवरसीज किस्म की टेरिटरी होती है किसी देश के लिए, तो उसके अपने ही टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, वहां पर ज्यादा कोई टैक्स वैक्स देना नहीं पड़ता है, बहुत बढ़िया किस्म की वहां के लोग जो है जिंदगी बिता लेते हैं टैक्स वैक्स बचा के एकदम, ठीक है। अब देखा जाए तो ये जो जगह है, जो जिब्राल्टर जो जगह है, ये जो है ऑफशोर बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है भाई, यानी कि एकदम मेन ब्रिटेन से लगा नहीं है, तो खास करके वहां पर कोई ज्यादा टैक्स पेइंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो बहुत अच्छा वहां पर कह सकते हैं आप फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है। और साथ ही में यूरोपियन यूनियन की जो पार्टनरशिप है, वहां पे जो दूसरे पार्टनर कंट्रीज हैं वो भी काफी इन्वेस्टमेंट करती हैं उस जगह पे। सो यू नो व्हाट, इट्स स्टेटस the status of Gibraltar as an offshore banking sector, thanks to its low tax environment, is boosted by its membership of the European Union, as many of the people who are actually a part of the European Union, they also invested in this particular place of Gibraltar. Now, even before the referendum, there was warnings that the Brexit could complicate the delicate balance that had been struck between Britain and Spain in recent years over the thorny issue of the rock, as it is often known. Well, my dear friends, I don't know, but I suppose you would have watched the film The Rock, right? Not The Rock Dwayne Johnson. मैं उस रॉक की बात नहीं कर रहा हूं। एक फिल्म आई थी रॉक करके, जहां पर एक पर्टिकुलर आइलैंड दिखाया गया था, उस आइलैंड का नाम भी यही था, द रॉक, इफ यू गाइज रिमेंबर बाय द वे। एनीवे सो कह सकते हैं आप कुछ उसी के जैसा ही ये पर्टिकुलर आइलैंड है। सो इवन बिफोर द रेफरेंडम ऑफ ऑन ब्रेक्जिट, बेसिकली उस रेफरेंडम को होने के पहले ही ये वहां पर माहौल बना हुआ था वहां पर कि देखो भाई, अगर ब्रेक्जिट हो गया तो जिब्राल्टर में जो है, क्योंकि ये ब्रिटिश और स्पेन के बीच में बहुत ज्यादा गर्मा गर्म वाला मुद्दा रहा है, तो भाई काफी बवाल हो सकता है यहां पर अगर ब्रिटेन वालों ने बेसिकली यूरोप से एग्जिट कर दिया, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर दिया। इसीलिए जो है वो चाहते थे कि ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन में ही रहे। नाउ, so
even before the referendum, there were warnings that the Brexit could actually complicate or make tough the things of the soft balance that had been struck between the Britain and Spain in the recent years over the conflicting issue of the rock, as Gibraltar is often known. Now let's take a look at the next one, and here comes this particular question for you. Okay, before that, the vocab review. Yes, the vocab review पहले यहाँ पे आ जाएगा. Overseas is definitely across an ocean, तो obvious है कि कह सकते हैं आप 7 समंदर पार, right? So, overseas or across an ocean. Then resounding is electrifying, by the way. So, electrifying or resounding, that's kind of a thing. Very energizing, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आप उत्साह पूर्वक किस्म का और बहुत ही भारी मत से. Then interlinked is interlinked, so what do you say? जुड़ा हुआ, intertwined किस्म का चीज़ भाई. Then offshore is situated abroad, by the way, with less stringent regulation. यानी कि offshore अगर देखा जाए तो किसी मतलब दूसरी देश में या फिर एकदम बहुत ही बाहरी किस्म के या दूर के हिस्से में जहां पर ज्यादा टफ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो. Then complicate is obviously to make tougher, to make something more puzzlier. तो ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेट करना यानी कि ज्यादा मुश्किल कर देना. डेलिकेट इज सॉफ्ट, बहुत ही बहुत ही लाइट, बहुत ही सॉफ्ट टाइप की चीज. देन थॉर्नी इज कन्फ्लिक्टिंग, बेसिकली कह सकते हैं बेसिकली आप आपत्तिजनक या फिर विवादास्पद कह सकते हैं, थॉर्नी. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, एंड कैन यू गाइज हिट अ 4 ऑन क्वेश्चन नंबर 4? लेट्स फाइंड आउट. So, even before the referendum, there were warnings that Brexit could complicate the delicate balance that had been struck between. Now, these are your options. Check them out. Tell me the correct answer. Your time starts now. Hurry up, guys. Hurry up. 30 seconds. Twenty seconds left to answer. Hurry up. Last 10 seconds, hurry up. What's the answer? And 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. तो भाई समय समाप्त हो चुका है. I can see people constantly hitting boundaries and constantly hitting 4, 4, 4, 4, 4. Okay, well, statement now. The question was, even before the referendum, there were warnings that Brexit could complicate the delicate balance that had been struck between. Statement 1 is Britain and Portugal in recent years. Did we talk about Britain and Portugal? We did not. That's why this cannot be the answer. Option number 2 says France and Spain. Did we talk about France and Spain? No, we did not. That means statement 2 cannot be the answer as well. Now, statement 3 says Britain and Spain. That's pretty good. Now, Britain and Spain in recent years over the thorny issue of the stone. Did we talk about the stone? No, we did not. Now, option number 5 says Britain and Germany in recent years. Did we talk about Britain and Germany? No, we did not. That means only option number 4 can be the genuine answer, my dear friends. And let's take a look at it. So, Britain and Spain in recent years over the conflicting issue of the rock, as it is often known. That means, my dear friends, all those of you who hit option number 4, you have done a good job because that is the correct answer. तो वो सभी लोग जिन्होंने सच में यहाँ चौका मारा है इस सवाल पे, उन्होंने सही जवाब दिया है. कहीं मैंने आप लोगों को what do you say, coincidentally hint तो नहीं दे दिया था. Well, God knows anyway. So I hope that you guys would have scored 4 on 4 for sure. And if it's not 4 on 4, even 3 on 4 and around is also a very beautiful score. I hope, my dear friends, that you are constantly enjoying the things. You're also liking the video and you're also sharing the video constantly so that we can get as many people as we can to watch and clear out the confusions of the Hindu editorial. And now, my dear friends, it's time for taking a look at the next part of the articles. तो अगर चंगा है तो let's take a look at the next part of the article. Now, a British outpost in Europe. तो देखा जाए तो भाई British outpost in Europe. अब क्या चीज है ये? Gibraltar. Now, let's take a look at the history of Gibraltar. So, Gibraltar is a British overseas territory ceded to Britain in 1713. Now, one of 14 such locations dotted across the globe, though the only one to be part of the EU single market. It is not a part of the customs union.
वेल माय डियर फ्रेंड्स, जो जिब्राल्टर जगह है ये जो है ब्रिटेन की एक ओवरसीज टेरिटरी है, यानी कि एक ऐसी टेरिटरी है जो कि ब्रिटेन का मेन लैंड का पार्ट नहीं है, बाहरी टेरिटरी है। साथ ही में ये जो है ब्रिटेन को मिली थी 1713 में, और ऐसी जो है तकरीबन कह सकते हैं आप ओवरसोर्स तकरीबन 14 किस्म की ओवरसीज टेरिटरी है ब्रिटेन की, जो कि मिल चुकी है ब्रिटेन को, और ऑब्वियस है कि ये उनमें से एक है। हालांकि ये अकेली ऐसी ओवरसीज टेरिटरी है ब्रिटेन की जो कि बेसिकली ईयू सिंगल मार्केट का हिस्सा है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के कस्टम्स यूनियन का हिस्सा नहीं है। सो यू नो व्हाट, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बहुत सारे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, उनमें से जो मेन है वो है सिंगल मार्केट। तो सिंगल मार्केट का हिस्सा है जिब्राल्टर, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के कस्टम्स यूनियन का हिस्सा नहीं है। सो जिब्राल्टर बाय द वे इज अ पार्ट ऑफ द, इज एक्चुअली अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी दैट द ब्रिटिशर्स obtained, the Britain obtained in 1713, and it is actually one of the 14 such overseas territory that British has, of the Britain has, by the way. And no, this is the only overseas territory of Britain that is actually a part of the European Union single market, though it is not a part of the customs union of European Union. Now, the population has been resolutely committed to remaining Britain and, to remaining in Britain, and when it was offered the choice in past decades. अब देखा जाए तो जितनी बात जिब्राल्टर के लोगों को, अब ऑब्वियस है भाई, देखो स्पेन के दिल में तो दर्द होगा ही ना, उसके बेसिकली देखा जाए तो दक्षिण की तरफ स्पेन के ही साउथ में देखा जाए तो ये हिस्सा है जो कि ये कह रहा है कि नहीं, मैं ब्रिटेन को ही अपना देश मानता हूं। ब्रिटेन है सदियों पार, एकदम नदियों पार, एकदम कह सकते हैं आप समंदर पार, और ये कह रहा है कि नहीं, ये ब्रिटिश के पास ही रहेगा। अच्छा, देखा जाए तो भाई स्पेन की शराफत भी जो है देखनी बनती है कि जिब्राल्टर उससे जस्ट चिपका हुआ है और वो पूछ रहा है कि भाई क्या तुम हमसे मिलोगे या तुम अंग्रेजों के ही रहोगे, और हमेशा वो लोग यही कह रहे हैं नहीं नहीं, हम अंग्रेजों के ही रहेंगे, हम स्पेन की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो खैर जितनी बार भी रेफरेंडम्स किए गए हैं और बात उठी है कि भाई अब तो हमारी तरफ आ जाओ, उतनी बार वहां के जिब्राल्टर के लोगों ने कहा है नहीं, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, हम अंग्रेजों के साथ ही लगान खेलेंगे और उन्हीं की तरफ रहेंगे। एनीवे, सो so no matter what, there have been lots of referendums and the stuff like that, but always the people of the Gibraltar, they have always chosen to remain with the British and not go with anything else, and not go with any other country. Well, in 1967, a referendum on whether to pass under Spanish sovereignty or retain their links with Britain resulted in over 99% वोटिंग दैट इन फेवर ऑफ द लैटर ऑप्शन। भाई देखा जाए तो 1967 में फाइनली स्पेन से रहा नहीं गया और उसने जो है एकदम जोरदार तरीके से पूछ लिया, जिब्राल्टर वासियों, क्या तुम मेरे हो या तुम अंग्रेजों के हो? तो भाई देखा जाए तो 99% जिब्राल्टर वासियों ने कहा नहीं, हम अंग्रेजों के ही रहेंगे भुवन, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। वेल, I suppose, भुवन तो नहीं, खैर कुछ और नाम रहा होगा, but anyways, so in 1967, when a referendum was held by the Spanish guys regarding that, would Gibraltar like to be a part of Spain? Well, when they had the referendum, 99% of the people said no, we'll rather be a part of the Britain than be a part of Spanish and have Spanish tomatoes or whatsoever. Anyway, नाउ आई होप माय डियर फ्रेंड्स इतना बढ़िया से बैठ गया होगा, और अब हम लोग देखते हैं अगला वाला हिस्सा। नाउ अ सेकंड रेफरेंडम हेल्ड इन 2002 which proposed joint sovereignty with Spain was also rejected by 98.97 of the voters. अब देखा जाए तो मतलब भाई 2002 में स्पेन को फिर से दिल में दर्द हुआ, उसने ऐसा कहा यार ये हमारी तरफ तो आ नहीं रहा है, तो चलो कुछ और तरीका निकाला जाए। तो उसने ये कहा भाई सुनो जिब्राल्टर वालों, 2002 में उसने ये कहा चलो अच्छा ठीक है, तुमको हम भी अपना हिस्सा मान लेते हैं, तुमको हम ये कहते हैं कि तुम अंग्रेजों के भी हिस्से में हो और तुम हमारे में भी हिस्से में हो, बताओ अब क्या कहते हो? तब भी जो है 98.97 लोगों ने कहा ऐसा है, सुनो स्पेन वासियों, हम तुम्हारे हिस्से में नहीं है, हम अंग्रेजों के हिस्से में ही है, हमको वही वाला हिस्सा ज्यादा पसंद है। एनीवे, सो अ सेकंड रेफरेंडम वाज हेल्ड इन 2002 व्हिच प्रपोज्ड जॉइंट सॉवरेनिटी विद स्पेन and was also rejected by 98.97% of the voters. Okay, now
over the centuries, by the way. So over the centuries, the relationship between the Britain and Spain over Gibraltar has been marked by tensions, with various developments such as an early visit by Queen Elizabeth in 1950s and 1965 Red Book published by Spain that accused Britain of imperialistic advances and stoking the situation. तो लग तो ऐसा रहा है कि मान लो ब्रिटेन और स्पेन जो है ये डाइवोर्सी माँ बाप हो और इनका जो ये बच्चा है गिब्राल्टर, ये दोनों उस पर हक जमाने पर लगे हुए हैं, जबकि जो है कोर्ट ने जो है ब्रिटेन को दे रखा है इसका जो कस्टडी है उसको. एनीवे, नाउ वेल माय डियर फ्रेंड्स, देखा जाए तो सदियों तक जो है ये जिब्राल्टर वाला जो मुद्दा रहा है ना, ये बहुत गर्मा गर्म टाइप का रहा है, एकदम गर्म चाय के जैसा ब्रिटेन और स्पेन के बीच में, और लगातार वहां टेंशन पे टेंशन होती रही है कि नहीं, ब्रिटेन कहता है ये मेरा हिस्सा है, उसकी तरफ आग उठा के मत देखो, और स्पेन कहता है कौन सा हिस्सा, हाँ कौन सा हिस्सा, वो मेरे साउथ में है, वो मेरा हिस्सा है. ठीक है, अब देखा जाए मतलब ऐसे बहुत सारे बवाल होते रहे हैं. नाउ अब देखा जाए तो अलग अलग किस्म के मतलब चीजें भी हुई हैं, अलग अलग किस्म के इवेंट्स भी हुए हैं. अब देखा जाए तो 1950 के दशक में क्वीन एलिजाबेथ पहुंच गई थी वहां पर ये जताने, दिस जिब्राल्टर belongs to the Great Britain and I am the queen of it. Anyways, well, I think she would have said in a different way, definitely. Now, no offense to the queen. Okay. And in 1965 देखा जाए तो 1965 में स्पेन वासियों ने एकदम खुन्नस के मारे एक लाल किताब भी निकाल दी. अब बताओ, ये लोग 1965 में लाल किताब निकाले हैं. हमारे कल्चर में देखो 2000 साल से जो है लाल किताब चलती आ रही है. एनीवेज, तो इनकी जो लाल किताब थी उसमें ये दिखा हुआ था, ये जो अंग्रेज हैं ना, ये बार बार जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये बार बार जो है भड़की हुई भावनाओं को बढ़ाते हैं और बार बार जो है गलत काम करते हैं, जिससे कि जो है हमेशा लोग भड़क जाते हैं जिब्राल्टर वाले और हमारे खिलाफ हो जाते हैं. एनीवेज, सो ओवर द सेंचुरीज, यू नो, the relationship between Britain and Spain over Gibraltar has been marked by extreme tension and stuff like that, with various developments of events such as the early visit by Queen Elizabeth in the 1950s and a 1965 Red Book published by Spain that accused Britain of imperialistic advances and stoking the situation, means, you know, trying to aggravate the situation. Well, let's take a look at the vocab review, and here it is. So resolutely is definitely in a determined way, बिल्कुल determined तरीके से resolutely हो जाएगा. Then sovereignty is obviously the authority to govern. So sovereignty basically वहाँ किसी भी जगह का govern करने का, या फिर कह सकते हैं आप वहाँ पर जो है मतलब सरकार में रहने की जो ताकत है, जो और वहाँ बेसिकली वहाँ रूल करने की जो ताकत है. Retain is to continue to keep possession of, तो यानी कि जो भी संबंध हो, जैसा भी हो, उसको रखे रहना, वो retain की मीनिंग में आ जाएगा. Then imperialistic is related to extending your rule to foreign countries. तो मतलब you can say, you know, so you can understand very well that, you know, Spain has always been blaming, accusing Britain of imperialistic things. That means, you know, it has been accusing Britain of extending the rule of Britain to foreign countries. तो देखा जाए भाई, imperialistic ये होता है कि साथ ही में जो है मतलब वो अपना जो रूल है वो दूसरे जगह कंट्रीज पे करते आए हैं, फॉरेन कंट्रीज पे करते आए हैं. तो इस चीज का इल्जाम लगा रहा था स्पेन उन पे. देन स्टोकिंग इज ऑब्वियसली फ्यूलिंग और भड़काना इन हिंदी. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 एंड हियर इट कम्स. So which of the following is not true according to the passage? तो बताइए भाई, बेसिकली देखा जाए तो यहां 3 स्टेटमेंट्स हैं और इनमें से कौन सा असत्य है. समय आपके पास शुरू होता है अब. You got 30 seconds. Time's up. Time starts now. Hurry up quickly. $20 seconds left to give the answer. Hurry up, guys. Last 10 seconds, hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. And Ekta has given the first answer, followed by Chandni and Vivek Raj. And now I can see a lot of answers coming up continuously. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Okay, well. The thing is, statement A says the population has been resolutely committed to remaining in Britain when offered the choice in past decades. Well, this was true, yeah, so diya hi hua tha, that's why this cannot be a part of the not true answer. Statement B says a second referendum held in 2002 which proposed joint sovereignty with Spain was accepted by 98.97% of the voters. Was it accepted? No, it was rejected. That means statement B is actually a part of not true. Statement C says Gibraltar is a British overseas territory ceded to Britain in 1712.
did it got ceded, was it ceded to Britain in 1712? No, it was not. It was ceded to Britain in 1713. That means statement C is also not true, which means, my dear friends, only B and C, option number 4. This is the correct answer. So all those of you who hit a 4 again on question number 5, you have done a good job because that is the correct answer. तो वो सभी लोग जो IPL की आत्मा जिनके अंदर है और वो चौके पे चौके मारे जा रहे हैं, उन्होंने सही काम किया है because yes, option number 4 is the correct answer over here as well. And I hope that you guys would have scored 5 on 5 for sure. And if it's not 5 on 5, even 4 on 5 and around is also a very beautiful score. The main point is that जो समझा रहा हूं वो बैठ रहा है, और अगर बैठ रहा है तो आप लिख सकते हैं बोसे गेचे सर. And now let's take a look at the next part of the article. Well, modern tensions reached their height in 1969 when a new constitution of Gibraltar declared that it would remain a part of Britain's dominions. अब देखा जाए भाई तो जो मॉडर्न किस्म यानी कि जो हाल ही में जो टेंशन्स हुए हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं 1969 की, बट तब भी यह हाल ही माना जाएगा. तो देखा जाए भाई तो एकदम जो टेंशनबाजी चल रही थी उस जिब्राल्टर के इलाके में, तो सबसे ज्यादा जो एकदम चरम पे टेंशनबाजी पहुंच गई थी वो पहुंच गई थी 1969 में. क्योंकि 1967 में जो है देखा जाए तो किताब निकाल दिए थे, लाल किताब स्पेन वाले. तो लो भैया, उनको झटका देते हुए अंग्रेजों ने भी उन्होंने नया संविधान तैयार कर दिया जिब्राल्टर का. लो भैया, तो स्पेन वालों ने किताब निकाली, इधर अंग्रेजों ने जो है पूरा संविधान निकाल डाला. और उस संविधान में जो है 1967 में ये लिख दिया था जिब्राल्टर के कि ये दिस पार्ट ऑफ जिब्राल्टर, ये जो हिस्सा है जिब्राल्टर का, ये हमेशा के लिए अंग्रेजों के पास ही रहेगा. So the modern times, the modern tensions reached their zenith or the height in 1969 when a new constitution of Gibraltar declared that it would remain a part of Britain's dominion. Now, the Spanish dictator Francisco Franco, क्या नाम है? Francisco Franco shut the border, by the way, which remained closed till 1982, several years after his death. अब, बोलता ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब 67 में किसने कहा था किताब निकालने के लिए, लेकिन स्पेन वालों ने किताब निकाल दी. तो लो भैया, ये भी कोई बड़के वाले ही थे जितने अंग्रेज थे, इन्होंने 69 में फिर जो है पूरा संविधान निकाल डाला. अब ऑब्वियस से उस संविधान में इन्होंने लिख डाला कि ये जो है हमेशा अंग्रेजों के पास रहेगा और किसी के पास नहीं जाएगा. तो ये देख के जो स्पेनिश डिक्टेटर थे फ्रांसिस्को फ्रांको, एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप का उनका हालत हो गई. तो उन्होंने क्या किया, जितना लंबा बॉर्डर था, मतलब जितना लंबा बॉर्डर था इस बेसिकली जिब्राल्टर के साथ, उन्होंने पूरा बॉर्डर पे जो है एकदम सील कर दिया और पूरे बॉर्डर को सील कर डाला उन्होंने. ठीक है कि ठीक है भाई, अगर ये मेरी नहीं हो सकती तो मेरे तरफ से भी कोई बंदा इसके जाके नहीं चल होगा. एनीवे, the Spanish dictator Francisco Franco, by the way, what do you say? He shut the entire border, which remained closed, by the way, till 1982, several years after his death. Anyway, EU membership of both Spain and Britain has influenced the treatment of Gibraltar in a number of ways, says Richard Whiteman, head of politics and international relations at Kent University and a senior fellow at Chatham House. Okay. अब देखा जाए भाई तो अब देखो, अब एंट्री होने वाली है एक और अंकल की. ये जो अंकल है इनका नाम है रिचर्ड वाइटमैन. ये जो है हेड हैं, सर हैं किसके, मतलब ऐसा सर नहीं, हेड हैं. ये हेड है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के केंट यूनिवर्सिटी के, और एक सीनियर फेलो भी हैं चैथम हाउस के. इनका ये मानना है कि देखो भाई, एक तरफ स्पेन भी ईयू का मेंबर है और दूसरी तरफ ब्रिटेन भी ईयू का मेंबर है. तो इन दोनों की जो मेंबरशिप है तो इसका जो है अलग अलग तरीके से असर पड़ा है जिब्राल्टर पर. सो यू नो व्हाट, now, so by the way, what do you say? That, see, this guy, by the way, a particular guy, what do you say, Richard Whiteman, Richard Whiteman is the head of politics and international relations at Kent University and a senior fellow at Chatham House. According to him, the EU membership of both Spain and Britain has influenced the treatment of Gibraltar in a number of ways. Well, now, this is what he said. When the UK joined the European Union community, it got principle accepted that Gibraltar was in effect part of the UK's accession to the EU.
अब देखा जाए तो भाई ये कह रहे हैं कि जब अंग्रेज जो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किए तो वहां पर उन्होंने जो है मतलब एक फंडा बिल्कुल तय करवा लिया कि जिब्राल्टर जो है ना ये हमारा ही हिस्सा है और हम जो आपके साथ जुड़ रहे हैं यूरोपियन यूनियन के, तो ये भी हमारे साथ, हमारा ये बछुआ जो है ये भी उसका हिस्सा रहेगा. So when the UK joined the European Economic Community, it got the principle accepted. मतलब you have to stamp it, you have to accept it that Gibraltar was in effect part of the UK's accessories of the European Union. Well, the UK used EU membership to normalize the situation and not make it anomalous in any way. अब देखो भाई, वो समझ रहे थे, वो एक तो वो लगान का मैच हार ही गए थे हम लोगों के साथ ज्यादा गर्मा गर्मी करके, तो अंग्रेज जो है समझ गए कि देखो भैया, एक तो हम लोग को इंडियन ने लगान में मैच हरा दिए थे, भुवन ने जो है एकदम हम लोग की नाक कटवा दी थी, तो ऐसा ना हो कि हम ज्यादा जो है गर्म गर्म हो जाए यहाँ पर, फिर मामला बिगड़ जाए. तो जो यूके वाले जो है वो जैसे ही यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किए तो उसके बाद जिब्राल्टर पर जो है उन्होंने मामला शांत करने का सोचा और तब जो है उन्होंने शांत करने की प्रतिक्रिया भी शुरू करी. So the UK, by the way, used EU membership to normalize the situation, and not make it anomalous in any way. He says, adding that when Spain did join the Union, it implicitly recognized the status of Gibraltar. अब साथ ही में अब भाई स्पेन वालों ने देखा ये क्या, अंग्रेजों ने EU ज्वाइन कर लिया और जिब्राल्टर का अपना हिस्सा भी बनवा लिया. तो पहले तो एकदम बहुत अच्छे से वो लोग रोए, एकदम देवदास स्टाइल में. मैं रो नहीं सकता, बाय द वे, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. एनीवे, उसके बाद जो है वो भी चुप्पे से ज्वाइन कर लिए यूरोपियन यूनियन और उन्होंने ये बोला ठीक है भाई, तुम्हारा ही हिस्सा है, तुम्हारा ही हिस्सा है जिब्राल्टर. तो उन्होंने मतलब ऐसे करके अंग्रेजों को बोल दिया. एनीवे, सो व्हेन बाय द वे स्पेन जॉइंड द यूरोपियन यूनियन, इट इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड द स्टेटस ऑफ जिब्राल्टर. नाउ EU, UK and Gibraltar. All right. अब देखा जाए तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है वो समझते हैं. Despite the clear role that the EU played in stabilizing the situation, it was accorded limited attention. अब देखा जाए भाई, इस्तेमाल बेसिकली EU का किया अंग्रेजों ने, और जो मामला शांत हुआ वो यूरोपियन यूनियन के देशों ने मिलकर शांत किया था, जिब्राल्टर वाला. लेकिन जो है जब बात क्रेडिट की आती है तो अंग्रेज जो है ना बहुत कम ही क्रेडिट देते हैं EU वालों को मामला शांत करने के लिए. इन वेस्टमिनिस्टर एटलीस्ट. ओके, वेल, द व्हाइट पेपर आउटलाइनिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पोजिशन on Brexit, published in February, made brief mention of Gibraltar, nothing that it had particular interest and was not part of a customs union. अब देखा जाए तो obviously जब जिब्राल्टर ने भैया पक्ष दिया भी, या फिर जब जिब्राल्टर के बारे में छापा भी गया वहां पर पेपरों में, वहां पर ब्रिटेन में, तो वहां पर यह छापा गया कि भाई देखा जाए जिब्राल्टर जो है कस्टम्स यूनियन का हिस्सा नहीं है यूरोपियन यूनियन के अंदर देखा जाए, और बेसिकली हमारे पार्ट है तो इसलिए हम छाप रहे हैं, लेकिन जिब्राल्टर जो है वो कस्टम्स यूनियन का पार्ट नहीं है यूरोपियन यूनियन में. ओके, so basically now see, this was what they mentioned regarding Gibraltar with the sense of European Union. Well, the British government's position on Brexit published, the white paper outlining the British government's position on Brexit published in February, by the way, it's talking about a recent thing, made brief mention of Gibraltar, noting that it had a particular interest and was not part of customs union. However, it was not referred to the formal letter of Prime Minister Theresa May sent last week triggering the Brexit talks. अब देखा जाए तो पिछले हफ्ते में, एक तो इनका नाम ऐसा है थेरेसा मे, सुन के ऐसे लगता पता नहीं किस महीने की बात हो रही है. खैर, ये कहना चाह रही है. आप देखो भाई, जो अंग्रेजों के जो प्रधानमंत्री जी हैं अभी, थेरेसा मे मैडम, इन्होंने जो है पिछले हफ्ते ब्रेक्जिट टॉक्स के लिए जो पत्र भेजे थे, जो उसमें जो है इन्होंने हालांकि कोई भी बात नहीं करी है जिब्राल्टर के लोगों के बारे में. सो जिब्राल्टर वॉज नॉट रेफर्ड टू इन द फॉर्मल लेटर दैट प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे सेंट लास्ट वीक ट्रिगरिंग ब्रेक्जिट टॉक. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द वोकैब रिव्यू एंड हियर इट इज. Whoops, not the vocab review, by the way. Let's take a look at the cloze test, and here is the new pattern cloze test. So tell me, my dear friends, influence का एंटोनिम क्या होने वाला है यहाँ पर, तो बताओ भुवन. भुवन, आप मान लो अपने आपको एक टाइम के लिए भुवन हो, बताओ भुवन. यहां पर इस छक्के, इस बेसिकली ये जो छक्का वाला क्वेश्चन है, इस छक्के वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, और आपको एंटोनिम बताना है मुझे इन्फ्लुएंस का. तो ये जो आखिरी गोला है इस पर छक्का लगाओ और बताओ इन्फ्लुएंस का एंटोनिम क्या होगा. छक्का लगाने के लिए आपके पास है 30 सेकेंड. टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप. Come on, 20 seconds more, guys. Hurry up. What's the answer?
Last 10 seconds, hurry up. So 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay. अब देखा जाए भाई तो you have to tell me the antonym of influence. Now see, affected, swayed. See, affected is a clear synonym of influence. Then again, swayed or prejudiced can be far synonyms of influence. And when we talk about balanced or predisposed, see, predisposed is actually pretty much like prejudiced. That means they are also a far synonyms of influence. लेकिन जब बात आती है बैलेंस की तो भुवन जिन्होंने यहां पर बैलेंस वाला स्ट्रोक खेला है उन्हीं का छक्का वैध माना जाएगा. बाकी सबको हम मान लेंगे कि वो लोग बाउंड्री पे आउट हो गए हैं. That means my dear friends, all those of you who chose option number 4, you have done a good job because that is the correct answer. कुछ लोग तो मतलब भुवन के नाम पे इतने भावुक हो गए जो ऑप्शन में नहीं है उनके बारे में बोल रहे हैं. You have to choose from the options, guys. Anyways, so I hope that you guys would have given the correct answer. Balanced option number 4, that is the correct answer. And I hope, my dear friends, that the majority of you would have loved the session and would have scored 6 on 6 for sure. And if it's not 6 on 6, even 4 on 6 and above is also a very beautiful score. So my dear friends, that was all in this particular session. I hope that you loved the session and you have been loving the IPL as well. बहुत ही दुख हुआ मुझको कि आरसीबी हार गई. हालांकि अच्छी बात ये लगी कि भाई युवराज सिंह की टीम जीत गई और जिसमें युवराज सिंह खेला था वो जीत गई. But anyways, my dear friends, let's just enjoy the IPL and also study for SBI PO most importantly, and NICL AO most importantly, and also keep watching Adda247 because with Adda247 and bank power, government job is right there in your pocket. Thank you, good night, Shubh Ratri, Shabba Khair, and it's IPL time.